अस्सलाम वालेकुम टीम अल्ट्रा। आज का जो टॉपिक है वो है प्रियस गाड़ी का इंजन। यहाँ पर आप ये दाग देख सकते हो, ये वाले। आज इसको भी क्लीन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल पूरा प्रॉपर इसको क्लीन करेंगे। यहाँ पर अक्सर औकात गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, जो कि इसको हम क्लीन करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई गाड़ी है और आप सेल करते हो और कोई कस्टमर यहाँ देखता है तो वो कहते हैं कि यार ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा गंदी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये कैसे साफ़ करें। हार्पिक इसमें लगेगा, ठीक है। हार्पिक में हम ब्रासों में मिक्स करेंगे, जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो वो दोनों मिक्स करके जिस तरह मैं करता हूँ सेम एज आपने भी उसी तरह करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
listen, I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to सो गाइज़ पूरा इंजन जो है वो क्लीन हो चुका है, ठीक है। और अब थोड़ा सा वेट करते हैं कि इंजन जो है पूरा प्रॉपर सूख जाए ना, तो इसको हम जो है टायर मैं आपको बता देता हूँ, सबर करें। तो हम यूज़ करेंगे टायर वैक्स जो है ये कैंगरू कंपनी से जो है आता है, लेकिन ये डस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम पकड़ती है। तो इसके डिस्क्रिप्शन पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि आप इसको गीले वाले चीज़ के ऊपर आप जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह का ये इंजन अभी गीला है ना, तो उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये प्रॉपर सूख जाए, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अच्छा बस यहाँ पर जो समझने वाली बात है, ये वाला एरिया यहाँ पर ओपन होता लगा हुआ है। एक यहाँ पर स्क्रू है और एक यहाँ पे, दोनों के मैंने ओपन किया है। इसकी नीचे की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसको भी हम साफ़ करेंगे ज़रूर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो दाग नज़र आ रहे थे वो सारे जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। और ये जब मैंने धो लिया है तो इसकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी वो कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ पे वो जो है वो ड्राइनेस ऐसा ज़्यादा आ चुका है। यहाँ पे जो दाग थे वो ख़त्म हो गए। अब जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो जो मैंने टायर वैक्स आपको वीडियो में बताया था, तो वो चीज़ अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो गाइस, अब कोशिश करें कि हर एक जगह पर ये पहुँच जाए, ठीक है। walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own city. सो गाइस, हर एक चीज़ लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि हर एक जगह पे ये जो है अपने आप को पहुंचा सके। तो उसके बाद हम आपको इसकी रिव्यू बताएंगे। 15 minutes later. अच्छा गाइस, अब इसके इंजन की कंडीशन आप देख लें। अब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ये गाड़ी जो है वो हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल 100% ये क्लीन हो चुकी है हर एक चीज़। ये जो हाँ यहाँ पर वाइट आपको ये नज़र आ रही है, वो मैंने उस टाइम टेरवेक्स जो उसके ऊपर लगाया है। तो ये जितना टाइम गुजरता जाएगा ये अपने आप ख़ुद इसमें जो है वो जज़ब होता जाएगा, और इसकी जो हेल्थ ख़राब हुई थी वो हेल्थ उसकी ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।